Let's begin. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in the first lecture, we saw the Winning Knowledge program and how it benefits, why it is important for the organization, and what are the challenges, what are the roadblocks. We can't call it as roadblocks, as you may remember, because it really depends on an individual how they uh, take this knowledge management as what I may say as a benefit, and how they implement it from time to time in their business or organization. And then we saw what can go wrong and why does it go wrong. It really doesn't go wrong. Nothing goes wrong. Nothing is wrong in this world, I feel. It is just that how you implement, how you take the knowledge management successfully towards your own benefit is important. You need to understand and implement it. Then we saw the roadblocks to success in knowledge management. What are the challenges? Well, focus is extremely important. Use of right technology at right place is important, we saw. And not all that comes in as technology is important. So you need to filter, we need to understand what is good and bad, or sometimes it is good, sometimes even it is bad, but bad needs to be converted. So it is important to understand this thin line of knowledge management as to why and how. I have seen a lot of case studies, or I have read a lot of case studies where big companies thought this is absolutely, it makes no sense. But there is some individual or some team or some big boss or the owner of the company who studies it, understands it, sees the gap in their company, and tries to ensure that they can bring in this new thing and implement, and that becomes a success. So it's a challenge. What's important here is a lot of you may have a point saying time is money. We all agree. I'm sure you all agree. Time is money, or money is time. So, how much time one needs to spend? But, well, this is what it is. This is tricky. This is very important to understand, and this is challenging. Making training one-to-one hit. One second. Yeah. So, making training a one-time hit is very important. You can't keep going through the same trainings. Upgrading your skills, upgrading the training. So if you have done the basic level course, to give you an example, if you have done Six Sigma green belt, then I will now complete my Six Sigma black belt. That is upgrading and making my training important and relevant. Implementing knowledge, winning knowledge man programs, we saw. And let's begin with today. So we have to finish a lot of, we have 17 slides. So I have to finish 17 slides in about 2 hours. So this will be slightly fast, but if you have any questions coming up in between, feel free to ask, and we can obviously stop and I can answer in between. निश्चित आपको आगे जाना होगा to slide number 10. वन आगे जाइए, आगे, यस, ये नहीं, इसके पहले वाला. Okay, so let's see what are the 5 core consideration for knowledge management. People. Your program should increase the ability of individuals within the organization to influence others with knowledge. Very pretty simple. We have run through this from time to time with the examples. Your program, whatever you conduct, whatever you learn, whatever you are going to undertake in terms of training, it should be increasing the ability of individual within the organizations to influence other with their knowledge. जो आप कुछ सीख रहे हो, whatever you're going to learn, you should disseminate it down the line.
Your company, when it sends you for training or for the higher education or for some skills upgradation, they can't send the entire company. अगर कंपनी में आपके डिपार्टमेंट में 50 जन होंगे और सब के सब ट्रेनिंग पे चले गए, it doesn't happen. So key 4 people, 3 people, or 2 people will come from that department. So it is your job to go through this training carefully, ensure that you learn from here, and then when you come back, as I said, you have not come back from the 3-day holiday or 4-day holiday. बहुत सारे जन समझते हैं ट्रेनिंग या स्किल अपग्रेडेशन या हायर एजुकेशन मीन्स छुट्टी, 3 साल की छुट्टी. कितने जन यहाँ समझ रहे हैं कि ये भाई पापा मम्मी ने इतने मेहनत करके यहाँ 3 साल के लिए पढ़ने के लिए बिठा भेजा है, तो काफी सारे जन समझते वाह 3 साल कोई टेंशन नहीं है. नो नो नो, इट इज नॉट छुट्टी, इट इज अ लर्निंग. And from here on, when you learn, you will implement it. You will ensure that you disseminate it at your workplace. So it is important to understand process. The process you establish should include best practices and governance for efficient and accurate identification, management, and dissemination of knowledge. It is very important that what best practices. A lot of them in the industry talk of lot of jargons. TQM, AI, ML, ISA, फलाना, कानबान, सब आपने सुना होगा. बहुत सारी चीजें हैं. There are lot of tools. सिक्स सिग्मा के बारे में मैंने बात किया. These are best practices in workplaces. But ISO 9000, in between, just to give an example in a minute, एक ऑर्गेनाइजेशन में ISO 9001 का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा था. तो बहुत सारे दिस वाज अ कंपनी ऑफ अबाउट 1200 पीपल, और उस टाइम मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कुछ ऑडिट कर रहा था. तो सब जन अपने बहुत बिजी थे, सर हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है. मैं क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो बोले कि मैंने बोला क्या चल क्या रहा है, बहुत सारे जन काम पे हैं. बोलते ISO 9001 कर रहा हूँ और उसका पेपर वर्क है, वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है और वापस देना है. तो मैंने 2-3 जन जो की लोग थे उनसे पूछा व्हाट इज ISO 9001. नो आइडिया. क्या मेरे को जवाब जो मिला वो बहुत एस्टोनिशिंग जवाब था. बोला था ये फॉर्म भरने बोला है, वो भर दूंगा, और ये क्या बकवास है समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा फ्री में फुकड़ में टाइम जा रहा है. आप सप्लाई चेन के ऑडिट के लिए आए हो और मैंने आपके साथ बैठना है, तो मैं ये फालतू का काम कर रहा हूँ. इट इज नॉट फालतू. ISO 9001 is a benchmark in the industry. Just imagine if you say ISO 9001 is फालतू और आप खाली फॉर्म भरोगे और दे दोगे, तो इसका मतलब है इंडस्ट्री में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इन ग्लोबल मार्केट्स. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो. निश्चित आपने सुना है 9001 ISO? No, sir. ओके, सो इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस भी स्लोली स्लोली पढ़ाई के साथ आपको रिसर्च करनी चाहिए. सो ISO 9001 इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड इन क्वालिटी, not only to a particular department, it is to a entire company. और ये अभी जितने स्टूडेंट्स है किसी ने भी 9001 ISO नहीं सुना है? None of you have heard? So after the class, as a matter of just in uh, as a matter of interest, because अभी आप अगले साल जॉब करोगे, तो ISO 9000, कानबान, TQM, ये सब सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस है. You will get job in pharma or for FMCG या fertilizers या oil and gas या supply chain या any company में आपको जॉब मिलेगा. सही है ना निश्चित? Yes, sir. तो इसमें स्टैंडर्ड तो इंपॉर्टेंट है ना. These are best practices. This improves quality. This improves performance. This delivers better practice. It gets you more revenue. You may see a lot of you must have seen on your packages sometime. Ours is a ISO 9000 company.
9001, 9005, 9007. These are different ISO standards. These are best practices in the working world. ऐसे बहुत सारे हैं. तो कमिंग टू दैट एग्जाम्पल, ये सुन के मैं ताजुब में पड़ गया. तो मैंने कहा अगर इनको ही अगर मालूम नहीं तो ये अपनी कलीग्स को क्या बताएंगे? What will there be a knowledge management transfer? Nothing, zero. So do not do that. Do not ever do this. Do justice to what you do. And as I have said here, for the efficient and accurate identification, efficient. If you are efficient, you will get first class in your exam. If you get first class, what will happen, Nishit? You will get a good, क्या होगा? जॉब. सही है ना? जॉब भी ढूंढ रहे हो ना? क्या पढ़ाई के बाद घर में सबका सोने का प्रोग्राम है? नो सर. नहीं ना? नहीं. मतलब एक जन तो सीरियसली जवाब दे रहा है. बच्चे कुछ कितने क्लास में मुझे पता नहीं है. तो चलो ऐसे ही अज्यूम करता हूँ सब पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि जॉब भी ढूंढने का इरादा है. अच्छा, इंटरव्यू में जवाब देना, नहीं तो यहाँ तो जवाब नहीं दोगे तो आपका प्रोफेसर या टीचर ऐसा समझेगा कि ब्लैक बोर्ड को पढ़ा रहा है. बट जॉब में जाओगे तो इंटरव्यूअर को जवाब दीजिएगा, ना तो बेचारा परेशान हो जाएगा. Let's go to technology. The technology you choose should enhance and how you configure and use tools and automation to enable knowledge management. So whenever you're choosing technology, you should first understand why are we upgrading? Why are we choosing? अगेन गिविंग यू एन एग्जाम्पल. काफी साल पहले एक कंपनी में उन्होंने कहा सर सैप नाम का चीज हमने सुना है. तो मैंने कहा बढ़िया. ये कंपनी में खाली 50 जन काम कर रहे थे. तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा टूल है. मैंने बोला सर आपका इरादा क्या है? बोलते चलो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इससे हमारी आसानी बढ़ जाएगी. Now to go with that example, SAP is good in a workplace where you have 500 or 1000 or more. Again, it is an expensive tool. And I knew that इस कंपनी में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल. ये कंपनी अगर बढ़ती है तो उसमें ये लोग ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिकॉज एक्सपेंसिव है और इसको ट्रेनिंग करने के लिए इस कंपनी में ज़्यादा लोग नहीं है. आई न्यू देयर वर्क प्लेस. तो मैंने फिर उनको एक सोल्यूशन दिया. मैंने कहा सर लोकली मेड ईआरपी टूल्स हैं. नॉट ओनली दे आर चीपर बट दे विल बेनिफिट योर वर्क प्लेस. आपके पास जो टीम है जो परचेस में है, सप्लाई चेन में, ऑपरेशंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके लिए ये आसान होगी. तो आप ऐसा टूल लीजिए जो आपके काम में आएगा. तो it is important. Technology, choosing the right technology at the right time at the right place is important. Tools are very fancy. मैंने कानबान कहा, सिक्स सिग्मा कहा, बहुत अच्छा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर कोई आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन, आईओटी टूल्स बात कर रहा है. आर्टिफिशियल वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहा है. ये बात करना आसान है. But as a good employee, when you step out, you need to first understand the benefits, understand the use, understand its implementation challenge, understand its cost. Nothing comes free. ये tools expensive है. ये कोई खिलौना नहीं है कि सर ले लो, ले लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे. So importance, structure. Organizational structure should transform to facilitate and encourage cross discipline awareness and expertise. I have often seen जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला बात कर रहा है वो सप्लाई चेन को समझ में नहीं आता है. जो सप्लाई चेन बात कर रहा है वो डिजाइन को समझ में नहीं आता है. देयर इज ऑलवेज इनबैलेंस इन द टीम. Remember, whenever you want to get to do something, if it is regarding to knowledge management or any other thing, you need to take your team into confidence. ये अकेले की बात नहीं है.
ये सप्लाई चेन डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये या तो प्रोडक्शन या डिज़ाइन या फाइनेंस की बात नहीं है. When it affects the entire team. So organizational structure should transform and facilitate and encourage cross discipline. What is cross discipline, Nishit? Sir, maintaining rules and regulations in an order of And what more? Cross discipline. Try to understand cross discipline मतलब क्या. मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया. It should be within all the departments and functions of your company. It's not about only your sales department. अगर sales department कुछ करता है तो what is cross functional discipline? That the entire company should understand how it is going to be important, how is it going to be benefited, right? आया समझ में? yes, sir. चलो, एक क्लास में एक ही जन प्रतिमा मैम पास होने वाला लगता है, या तो क्लास में एक ही जन को एक जॉब मिलेगा क्या? Culture. Your organization should establish and cultivate a knowledge sharing, knowledge driven culture for a long term success. I just gave you that example. It is not for an individual. It is for the entire organization. Let it be you being in a job or being in a business. Let it be a small business. Let it be a bigger business. Doesn't matter. Knowledge sharing should be for the entire company, entire team. It should benefit, it should help, it should transform the organization. That is what we call as a successful knowledge management transfer program. Next, please. Any questions? So prepare for implementation challenges. Now, this is a very important part. This plays a very important role. Next slide, Nishit. Okay. So prepare for an implementation challenge. Implementing a knowledge management program is no easy feat. अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैं सीख लिया तो मैंने कुछ बड़े तारे मार लिए या तीर मार लिए और ये तो बहुत आसान है. आई सी अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन गोइंग थ्रू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम पीपल टॉकिंग अ वेरी लूज टॉक. यार इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बकवास कर रहा है, ये तो बहुत आसान है, मैं तो अभी 1 मिनट में कर सकता हूँ. भाई अगर ऐसा इतना इजी होता तो कंपनीज क्यों चैलेंजेस फेस करती है. सो रिमेंबर, नॉलेज मैनेजमेंट ट्रांसफर इज नॉट इजी. It has its own challenge. From transfer, implementing is a second important challenge. And after implementation, ensuring that it is successful is one of the most important challenge. Even with the best planning, prepare to encounter and work around obstacles. A lot of time in organizations, you will see challenges where people are asking you questions. आपको क्यों ऐसे लग रहा है आप जो बोल रहे हो वो सही है, यहाँ तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम है. Now, every organization, every workplace has a different challenge. Every organization, every workplace, or every business will face new challenges every day. Every time you will see new customers having new problems. Every customer, what you have is not going to be similar. So, customer A may be quite easy, customer F will be absolutely challenging. Situation similar होगी, challenges अलग अलग होंगे. Now we feel, अरे यार ये कस्टमर तो बहुत डिफिकल्ट है. कस्टमर डिफिकल्ट नहीं है, यू आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ होम. निश्चित, you exist because of whom? How does a Yes, sir. business succeed? Business successful कैसे होता है?
और क्यों सर होता है? ये सर्वाइवल की वजह से सर, ग्रोथ एंड किससे? डेवलपमेंट। हाँ, बट उसके पहले कौन आता है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ और कस्टमर ग्रोथ। नहीं, कस्टमर आता है। यस सर, कस्टमर आता है। कस्टमर के विदाउट, अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो आपका बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन चलेगी क्या? यस सर, फिर नो इनोवेशन कैन बी हेल्ड इन द नट ऑर्गेनाइजेशन। राइट। अभी अगर आप पढ़ के आते हो, आप ऐसे समझ लो कि आप हार्वर्ड से पढ़ के आते हो या आईआईएम से पढ़ के आते हो या कुछ ट्रेनिंग लेके आते हो, सब कुछ बढ़िया है आपके पास, बट कस्टमर नहीं है, नो यूज, राइट? यस सर। So, implementing is important by keeping in mind that you are flexible and you are able to understand and pass on. Some common challenges you may want to prepare for including are inability to reorganize or articulate knowledge, turning tacit knowledge into explicit knowledge. It means something which what you have learned which is very difficult, but transforming it into a simple way. Not everything what you learn can be transformed in a simple way. There will be challenges. Geographical distance, language barriers, international companies like Unilever, Colgate Palmolive, Shell, BP, Total, Fina, all these companies are, you take General Motors, Ford, they face challenges at every level. The challenges in North America are different. The challenges in Eastern Europe are different. In Western Europe, different. Asia, Pacific, the bigger the company, the bigger the challenge. So अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने सीख लिया, तीर मार लिया, तो नहीं, इसको डिसमिनेट करके इम्प्लीमेंट करना अराउंड द वर्ल्ड, जितनी बड़ी कंपनी उतने बड़े challenges. There are limitations of information and communication technologies. There are challenges. We are in the world of internet. We are in the world of information and technology. We think by having internet is very easy. I think, or sometimes it is like teaching online. Teaching online is not easy, not at all. I can see out of 20 or 15 or how many of them are in the class, only one person is awake. Limitation of information and communication technologies. आज खाली 20 जन है. Last week I was teaching at a university which is from Pune. There were 90 students in the class. I had a lot of limitations, a lot of challenge. 90 students, impossible to teach. Impossible. So understand, इन कम्युनिकेशन वर्ल्ड अगर हमको लगता होगा कि ये यहाँ से वहाँ इंटरनेट से बात कर लिया, बट वो इतना आसान नहीं है. लूजली डिफाइंड एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, यस सर। very open ended, and lot of times we see people are just, इनको लगता है मैं एक्सपर्ट हूँ. What is an expert? There is no definition. Having 2 degrees, 3 degrees, becoming a PhD, or teaching in Harvard or IIM is not an expert. No way. I don't consider that as an expert. मैं खुद expert नहीं हूँ और ना भी ही बन पाऊंगा जितने साल जीऊंगा. Because every time I keep learning, constantly changing dynamics of business. Last 2 years has seen lot of companies transforming themselves to 360 degrees. If you are not able to transform, if you are not able to adapt, you are not able to change, not able to adjust, you will not survive. And implementing knowledges, transferring knowledge in constantly changing environment is very challenging and frustrating. You need a lot of patience. Internal conflicts, example professional territoriality. Internal companies में काफी challenges होते हैं. Every department thinks they are great. आप अभी step out करोगे, and when you start working, you will start understanding
What is meant by internal conflicts? हर एक एम्प्लॉई अपनी कंपनी में बादशाह होता है, ही इज अ किंग। उसको मतलब उसके साथ हर एक के साथ काम करना, मतलब हमेशा हम लोगों को ऐसा लगता है, वेर एवर आई वर्क, मैं मुझे हमेशा ऐसा लगता था मैं नौकर हूँ। आई यूज्ड टू गो एज एन एक्सपर्ट एंड आई यूज्ड टू ट्रीट माई सेल्फ एज अ नौकर, क्योंकि वहाँ वो लोग मेरे को कहते थे सर आपको ये नहीं मालूम, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो मैं हमेशा हाँ जी करते 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 काम करता हूँ, करते रहता हूँ और करते रहूँगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू learn this attribute if you want to succeed. Lack of incentives or performance management goals. Sometimes some companies do not appreciate your knowledge. Their management goals are completely different. This sometimes is very frustrating. This is very dissuading because यहाँ आपका मोरल कम हो जाता है। आपको ऐसे लग रहा है यार मैं क्या गधा हूँ जो ये सब कर रहा हूँ। But then you need to have patience. Poor training and mentoring. Lot of times you will see experts not qualified, not that experienced, not that learned. Mentoring is very important. It is very challenging. Mentoring can go on and on and on. आप कहोगे यार ये तो गधा है, इसको कहाँ से मैं ट्रेनिंग पे ले रहा हूँ। It's not that. You need to have a lot of patience. Not everybody can be the same. And that is extremely important to understand and learn. There are cultural barriers. This is how we have always done, mentality. And we need to accept that. You cannot do anything about it. If there is a challenge, it is a challenge. You cannot, there is no two way, there is no two solution. Patience is important. Cross cultures are very important. You will see in some good companies some very experienced HR professionals, those who have worked in global environments. The bigger companies have a habit. They keep rotating their employees around the world. Somebody who is sitting in Eastern Europe may go to Pacific, Asia, may come to Indian zones, may go to Africa, may go to North America, Latin America. Because why? ये उन लोगों को ट्रांसफर प्रोग्राम नहीं, to understand what are the challenges. The employees need to know what are the barriers, how the working environments in the working environment or the learning environment in Africa is not going to be similar to North America. The working and learning environment in North America is not going to be similar to Japan, Australia, and so forth. So this is important to understand. Unless and until you do not understand, you will not be able to train or pass this information. Next slide, please. Thank you. Any questions? No, sir. Great. Critical success factors for knowledge management sharing. It is estimated that an organization spend anywhere between 3% to 7% of their revenue. Just imagine. So if it is a 1,000 crore company or 2,000 crore, जय रिलायंस जैसी कंपनी होगी, 7% मतलब कितना अमाउंट हो गया of their revenue on technology. If technology is not implemented correctly or if you do not adequately prepare your employees for a change, it can be a huge drain on your company. It can cost you millions of dollars as a result of loss of productivity, and that no mention, and that not to mention technology spend itself. If the expensive new toy, SAP जैसे toy, I have seen SAP को लोग खिलौना ही बोलते हैं. It is very sad, but I have seen that your employees' needs sits unused. Nothing will change. Employees will still complain that they don't have tools necessary to be successful. Now, I will tell you very authoritatively or very not overconfidently but very confidently, 10 में से 7 कंपनीज में ये हालत है. I can't take the names of the companies because it is a privacy.
इट रिलेट्स टू प्राइवेसी, बट हम लोग जितना आसानी से बात करते हैं उतना आसानी से things don't happen in even multinational companies. So, knowledge management is not a waste, it is important, but how you go with the process is a art. And if you understand this art, it will not only benefit you but your company. सो जितने जल्दी आप ये आर्ट सीखोगे, पेशेंस रखोगे, उतना जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाओगे और उतना ही आपको करियर में ग्रोथ मिलेगा. दिस इज समथिंग व्हाट आई कैन गिव यू एज अ टिप when you are going to step out next year, and those who are going to try and find jobs, those who are also going to do their masters or PhD and then go and start working in their time life, this is also important to them. The truth is that this happens more than you might realize, and knowledge management platforms are no exception. Organizations invest in knowledge management platforms so that their employees, whether it is across an entire organization or within departments, can find and share the information they need to do their jobs successfully. Implementing a knowledge management solution requires a great deal of preparation, patience, and willingness to learn. I have already shared this. Hope this slide also helps you to learn. So next slide, Nishit. Any questions you can just pop up. I will be going slightly faster because we just have about an hour and a half and I have another 13 slides. So slightly थोड़ा fast रहूँगा, but अगर आपको किसी को कुछ doubt आ जाएगा तो please just unmute yourself and ask me a question. I'll be more than happy to answer. Is it okay? Yes, sir. Great. So define your goal. The first step with technology implementation. So it's not necessary only technology. The first step with any technology or knowledge management implementation is to define your goals and objectives. अगर आपके objectives और goals clear नहीं है तो आप clear नहीं हो. आप खाली एक प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो या कुछ टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो. कोशिश करना इज वेरी आसान, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इट इज नॉट रॉकेट साइंस. बट इम्प्लीमेंट करना इज 99% ऑफ द फर्स्ट. टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं मास्टर्स इन सप्लाई चेन कर रहा हूँ, इज 1%. सीखने के बाद अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा और उसको करियर में उसको आगे अगर बढ़ाऊंगा तो उसको कहते हैं सक्सेसफुल नॉलेज मैनेजमेंट ट्रांसफर. एम आई राइट? Yes, sir. Otherwise it is going to be another piece of paper. So if you're just there to acquire another piece of paper, I wish you all the best. But if you're 1% of the paper and 99% towards knowledge management, acquiring, learning, understanding, and then passing and implementing, then you are a successful student or employee or an entrepreneur, whatever you are wanting to be. While this might seem obvious, this is probably one of the biggest reasons why implementations fail, because हम लोग जो पढ़ते हैं वो implement ही नहीं करते हैं. हम लोग सोचते हैं यार छोड़ना यार, इसको कौन इसके पीछे लगेगा, ये क्या बकवास है, ये यार यहाँ ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है. यहाँ इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है. अनलेस यू डोंट ट्राई, नथिंग कैन हैपन. हाउ यू ट्राई, वेर यू ट्राई is your skill. This is what is called as skills. Skills मतलब क्या? It is important to understand. When you define your goals and objectives, you need to take into consideration each group who will be affected
Important to understand this. Meet with each one of the department heads and other company leaders to discuss and clearly define the goal and objectives for your knowledge management solution. Do not be a Hitler. हिटलर जैसे मत पढ़ो, मत पढ़ाओ या मत सीखो, समझो और उसको इंप्लीमेंट करो, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करो. अगर स्टेक होल्डर्स को, व्हाट इज अ स्टेक होल्डर? योर टीम, योर कंपनी, योर एम्प्लॉइज. हियर माय स्टेक होल्डर्स आर हु? निशित? यस सर. स्टेक होल्डर्स कौन है यहाँ जब मैं पढ़ा रहा हूं तो? सर हम सभी हैं सर. फंटेस्टिक, गुड. So this is very important. Your understanding. Good on you, Nishit. Congrats. Setting your goals early will also help you to determine how you will measure your performance and define success. Performance needs to be measured. Performance अगर measure नहीं होती तो उसका कोई मतलब नहीं है. And how do you measure performance? Not from the feedback. ये फीडबैक देने का जो नया फैड है, गिव मी अ रेटिंग, गिव मी अ फीडबैक, मेक्स नो सेंस. द फीडबैक इज व्हाट यू नो how the performance is to be measured. When Nishit passes out, joins a company, implements this, and then calls me up after 1 year or 6 months or 2 years down the line saying, Sir, आपने जो पढ़ाया था मैंने उसको implement किया and it is successful and that my company is doing very well. That is successful performance measurement. अभी अगर निशित मेरे को आउट ऑफ 10 अगर प्रतिमा मैम उसको बोलती है सर को रेटिंग दी दीजिए, he will say 9 marks, 10 marks. Makes no sense to me. Do you understand what I'm saying to say? Yes sir. And why am I trying to say this? Do you understand this? Yes sir. जब तक सर गोल अचीव नहीं होगा सर कोई फायदा नहीं है. जो आज आप 3 साल पढ़ोगे अगर उसको सक्सेसफुली स्टेप बाय स्टेप भी करियर में लाओगे और जब आप आपके टीचर को बोलोगे मैम सर आपने ये सिखाया था हमने ध्यान रख के ये ऐसे किया, दैट इज सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मेजरमेंट. ये सोशल मीडिया का रेटिंग बीटिंग ये कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है. डोंट टेक मी रॉन्ग, आई डोंट वांट टू बी sarcastic, बट आई वांट टू बी रियलिस्टिक. जो पढ़ोगे अगर इंप्लीमेंट करोगे सक्सेसफुल नॉलेज, नॉट ओनली दिस स्टडीज. अगर निश्चित अगर आप आगे जाके कुछ और अच्छा से ये कर लेते हो, कुछ एक स्किल लेते हो और अगर आप आपके कंपनी में सक्सेसफुल करके आप आपके बॉस को बताते हो और आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस चेंज होती है, दैट इज सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन. राइट? Yes sir. Great. Let's proceed to the next slide. Any questions on this? If you have any questions, just interrupt and ask. Otherwise, मैं थोड़ा बुलेट ट्रेन की स्पीड से थोड़ा आगे जाऊंगा. पूछते रहना because I have another 13 slides and just about 1.5 hours. Identify and articulate your motives. It's very important. आपके motives अगर clear नहीं है तो you are just firing in the thin air. Second to defining your goals and objectives is transparency, clarity. कुछ भी करो clarity रखो. अपने आप में खुद को शहंशाह मत समझो. शहंशाह अकबर बन जाओगे तो बेचारे सब लोग आपको सुनाएंगे, बट अगर उनके साथ रहोगे तो उनको समझ में भी आएगा कि क्या हो रहा है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई आर वी गेटिंग इनटू द depth of this knowledge management transfer and what are the challenges. knowledge management बोलना एक आसान चीज है, but I'm trying to get into the depth and trying to teach you. It's not as easy as what we are thinking. So
Second, to defining your goals and objective is transparency. The step is critical, especially considering 1 in 3 projects fail. 1 in 3 projects fail, matlab the percentage of failing of knowledge management is approximately 55 to 60%, plus and minus. Fail due to poor stakeholder engagement, according to research conducted by Project Management Institute. Anybody aware about what is Project Management Institute? अरे भाई अब थर्ड साल में गए हो, थोड़ा सीरियस बन जाओ. So Project Management Institute is an institute based in United States. It is all about project management. They have a certification called as PMP, Project Management Professional. It is about 30 hours learning, and then there is a certification. I have done that, and I'm a successful project management professional. It is an extremely interesting and important certification. जिसको project management में interest है should, after the class, research this and find out, and if you are interested you should do this project management. बहुत ही interesting है, and it has helped me immensely even in my working career. So just a hint for all of you. So once your goals and objectives are established, communicate this information back to the team so no one is left in dark. अपने आप को शहंशाह अकबर समझ के खुद ही कुछ करना अच्छी बात नहीं है. टीम को कॉन्फिडेंस में लीजिए, वर्क विद द टीम्स and make them understand what you're trying to do, so that they are all in line, so that what you're going to train them or transfer your learnings is going to be much easier, and it is going to be successful. And by doing this is going to not only help if it is your business to grow, and if you're working it will help your company to grow. And if both the situations grow, you will make more money. It's as simple as that. Take time to illustrate exactly how the new platform is, how it will improve their day-to-day working. By making it more personal, they will be more inclined to push through the learning curve. Now, काफी times in my life I see learning curve ऐसे जाती है, ऊपर जाती है. क्यों? Because we want to get that degree. तो 3 साल हम लोग आते हैं क्लास में, हाँ जी हाँ करते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ करते हैं, एग्जाम के टाइम पे काफ़ी टाइम्स अच्छे कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हम लोग सोते रहते हैं जैसे क्लास में सो रहे हैं. एंड देन व्हेन एग्जाम की टाइम आ जाती है तो हम लोग कहते हैं सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया. टीचर ने अगर प्रोजेक्ट दे दिया, सर मैडम ये तो बहुत टफ है, इसका मतलब क्या है. The learning curve is going to be always easy if you are awake in the class. So in the class of 20 or 25, if only one student is going to be awake, then this learning curve is not going to be easy. Make it personal. I'm trying to make it personal. When your teacher calls me, my job is only not to do this, read this, but I have to give you example. I have to give you some experiences. That makes it personal. It makes it interesting. इससे क्या होगा? You will understand it easily. When you understand easily, what will happen, Nishit? You will be able to do what? Implement, transform, transfer, right? So this is important. If nothing else is defining and communicating your goals with the platform, help an end users to distinguish it from other 10 platforms your organization uses, says Besley Anderson. He is the implementation project manager at Bloomfire. जब टाइम मिलेगा रिसर्च कर लीजिए why he is saying those so.
I see many companies that have what I call new software fatigue. बहुत interesting है ये. The best way to curb software fatigue is to communicate the specific purpose of your knowledge engagement platform clearly and often. मैं काफ़ी सारे बार लोगों को सुनता हूँ SAS प्लेटफॉर्म AI implementing AI learning AI machine learning IoT बहुत बार सुनता हूँ दिस इज वेरी फैशनेबल इजी बट उसका मतलब क्या है अगर उसका मतलब ही नहीं मालूम तो इम्प्लीमेंट क्या करोगे and that is why we call it as a software fatigue. Why is it called as a software fatigue? Not every company will be able to implement artificial intelligence, and your bosses think it is important. Not all companies will be able to use blockchain in supply chain. In supply chain, blockchain is very, very, very tough to implement. अब ब्लॉकचेन में इंप्लीमेंट करना उसको ब्लॉकचेन पुटिंग सप्लाई चेन इनटू पीसेस is not easy for a company like Ford, General Motors. Their supply chain is huge. If they put data into chunks and then put it and then try to block it will become so difficult for them to implement because in supply chain an analyst needs information at a finger's tip. हर टाइम अगर वो डेटा में वो ब्लॉक में जाके अगर इंफॉर्मेशन निकाल के उसको यहाँ अगर लाएगा तो उसको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा सो बीच में एक बड़ी कंपनी एक वन ऑफ द कंसल्टिंग कंपनीज अप्रोच मी सेइंग दैट विल यू बी इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ टीम which is trying to use blockchain in supply chain. कंपनी का नाम सुनते ही मैंने इमीडिएटली वो कंसल्टेंट को कह दिया टेल देम डोंट डू इट दे विल रिग्रेट and after 15-20 days and explanation and trying to inform them and teach them why it is not good their owners said thank you very much for telling us the right thing this is not practical software fatigue don't do anything or something just for the sake of doing it. Don't be afraid to address some of the knowledge management problems. As I gave you an example, your organization faces right off the bat, explain productivity, monetary losses. I explained you now. That happens when a customer success team can't find information they need to service a customer request. Excuse me, when your sales team takes too longer to onboard new reps, what happens when marketing notices a lack of consistent branding? Tell them to see the pain and not the platform, using the platform. Compare to the massive benefits the entire company will experience when the solution is fully implemented. Hopefully, I have given you examples, so that should help you to relate. Next slide, Nishit, please. Thanks. sir. Any questions? No, sir. बढ़िया. Develop a change management strategy. Even though you have established your goals and objectives, it is imperative to understand that change does not happen overnight. Knowledge management means not जादू की छड़ी आज सीख लिया कल इम्प्लीमेंट कर लिया ये प्रोसेस है ये प्रोसेस समटाइम्स आई हैव सीन कैन रन बिटवीन 3 months to a year also जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड but to implement and then see a change. A lot of times you will see, I'll give you an example. This is why it is important to recognize and develop a strategy, tactics for continuous change management.
So a lot of times when companies approach us, they say, अच्छा सर ये करने से ये हो जाएगा क्या, और फिर उससे ये हो सकता है क्या. सो उनको ऐसा लगता है कि हम लोग उनकी कंपनी के टीम्स को वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स ट्रेनिंग देंगे और फिर वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे कंपनी का चार चांद निकल जाएंगे या तो उनकी निकल पड़ेगी. इट डजंट हैपन ओवरनाइट. सो couple of years back, I was teaching at a college and one of the MBA second year students said, सर अब मुझे जॉब ढूंढना है और आप कुछ हेल्प करोगे. तो मैंने कहा आई हेल्प हिम आउट, आई गेव हिम गाइडेंस, बट आई टोल्ड हिम आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ जॉब. I could have given. He was a very nice student, very deserving, came from a very middle class family, and I knew he needed a job. And it was my job to help him so that it could help him and transform his family. But if I help him, then he may get lazy. So I gave him a lead. इतना करने के बाद उसने मेरे को कहा सर अब मैं एमबीए कर रहा हूँ तो कम से कम मेरे को स्टार्ट में 15-20 lakhs का तो पैकेज मिलना ही चाहिए. मैंने कहा अब ये तो भाई साहब तो एकदम बड़े मूड में दिख रहे हैं, इनको लग रहा है एमबीए हो गया मतलब हो गया, अपनी तो निकल पड़ी है. ऐसे नहीं होता है. Anything and everything in life has a phase. Understand that. लॉटरी अगर आप निकालोगे तो आपको अगर ये अज्यूम करके नहीं निकलना ये तो 1 करोड़ की लॉटरी निकलनी ही निकलनी है, ये मेरी ही है. जो ये इल्यूजन में है तो जाग जाए, और जो जागे हुए हैं वो और एक बार फिर से समझ ले, ताकि when you are stepping out in the world of knowledge management and everything, you will be able to understand and successfully do things in your life. To a certain extent, it doesn't matter how good your software is. If you don't have a solid plan for adoption, Betsy says change management is the human side of process improvement. More than technology, humans are still 99% of everything. Technology, I say, is only 1%. And why do I say that? Because even the best of the technology, if not understood by the human being, if not successfully implemented, if not successfully transformed, taught, understood, makes no sense. So it is 99% employee, 1% technology. बहुत सारे लोग कहते हैं it is 99% technology, 1% human being. It is exactly other way. That is why it is called as successful knowledge management transformation. मैंने आपको पढ़ा दिया, बट अगर आपने ठीक से नहीं इंप्लीमेंट किया तो समझ में आ रही है बात व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Anybody, everybody, can we understand? Yes, sir. Great. We recommend providing updates on engagement metrics and other KPIs, knowledge management indicators during department or company meetings. Company meetings मतलब आधे टाइम चाय पीना, कचौरी समोसे खाना, एक दूसरे को ताने मारना और बाद में कह देना ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. तो काफी कम बार मैं देखता हूं कंपनी मीटिंग्स में कुछ अच्छा हो रहा है. इसको कंपनी मीटिंग नहीं कहते. Waste of time. So if you do not have a good agenda, solid agenda, don't hold a meeting. Waste of time. And don't stop after your implementation. Also in company meetings, कोई managers या bosses को बहुत गंदे आदत होती है. सवेरे एक मीटिंग लेना, दोपहर को वापस मीटिंग लेना, शाम को जाने से पहले एक मीटिंग लेना. सो 10 घंटे में से 4.5-5 घंटे मीटिंग में या 4 घंटे मीटिंग, 1 घंटा लंच, आधा घंटा चाय. तुम्हारी परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होगी?
सही है, समझ में आ रहा है? काम कब करोगे? Yes. फिर आधे टाइम क्लाइंट फोन करता है, हम्म। आधे टाइम कंपनी के कलीग्स फोन करते हैं, अरे यार इसका डेटा दो, उसका डेटा दो, ये समझाओ, ये बताओ, वो बताओ। ये क्यों होता है पता है? बिकॉज जब आप बात कर रहे रहते हो तो आधे टाइम लोग सोते रहते हैं या अपनी दुनिया में रहते हैं। अगर क्लास में अगर आप अपनी दुनिया में रहोगे तो फिर सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, फिर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। परफेक्ट एग्जाम्पल, बराबर है ना निशित? सही बात है सर। हाँ, सो नॉलेज मैनेजमेंट का एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए क्या होता है। रिमाइंडर्स, यहाँ एक मैंने वर्ड डाला है, प्लेटफॉर्म ऑफ मोस्ट लॉन्चिंग मेंशन इट फ्रीक्वेंटली एंड रिमाइंडिंग अदर्स ऑफ बेनिफिट। रिमाइंडर्स इज ओनली नेसेसरी इन योर लाइफ if you want to succeed. Remember this: if you want to be a CEO of your company by the time you're 30, remember this: reminders are only necessary if you are sleeping. If you are awake, you will never ever need a reminder. हाँ। And if you want to be successful, reminder की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए. Then work for 24 hours or work for 25 hours or work for 7 days, 8 days, 360 days. You give me any excuse. सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्र है, in other words, you need to normalize. The new platform and help all teams to recognize the value it's bringing to the organization in real time. मैंने अभी आपको just एक सेकेंड पहले बताया, change is always hard, but the more you loop the new solution into everyday conversations arise. एक बार आपने एक थोड़ा सा हाथ दे दिया, लोग आइडियाज निकालते ही रहेंगे. In fact, I say human beings is equal to ideas. बस आदमी को टाइम दे दिया, बस आइडिया निकालते रहता है. बट ये आइडिया की जरूरत है क्या? इन फर्स्ट प्लेस, इज इट रियली एन आइडिया? इज इट नेसेसरी? इवेल्युएट, अंडरस्टैंड. बिकॉज अदरवाइज क्या होता है पता है? एक बैंक में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के टाइम पे हम लोगों को समझ में आ गया, लोग आइडिया देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं. मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है? काम कब कर रहे हो? इम्प्रोवाइजेशन कब आएगा? एक भी आइडिया इम्प्लीमेंट की नहीं सर. क्यों? सर प्रॉब्लम्स है. ए मान रहा है तो बी नहीं मानता है, डी मानता है तो जेड नहीं मानता है. मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है या मजाक है? तुम तुम्हारी टीम को ऑर्गेनाइज कर नहीं सकते तो आइडिया क्या खाक निकाल रहे हो? योर कंपनी, योर बैंक नेम विल बी, इफ अगर वो बैंक के नाम समझो एबीसीडी बैंक होगा तो तुम्हारे बैंक का नाम बदलना है क्या? आइडिया बैंक बोल के रखना है क्या? लैक ऑफ हार्मनी है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट इज क्रेजी. भाई हाथ पकड़, इफ आई एम गिविंग यू अ फिंगर, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पकड़ के ले लो. You need to define, you need to understand. There is some I call as, this is the space, this is the channel. एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब मजाक नहीं होता है, एक बिजनेस मतलब मजाक नहीं होता है. तुम्हारी कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर रही है? तुम बकवास कर रहे हो यहाँ बैठ के. फिर रोना नहीं है. और फिर लोग जवाब क्या देते हैं पता है? कंपटीशन है. भाई कंपटीशन की बगैर मजा कहाँ है जिंदगी में? सही है ना? If you think that you are going to be the king, it's not going to be anymore. Understand. Otherwise, you will never progress. It's as simple as that. आगे बढ़ो, ऐसा है.
So more comfortable you will feel. Asking questions to improve understanding and evangelizing others is important. Questions, but to what? How much? There is a frame, there is a time frame. Understand. Identify and recruit internal champions. एक ही बंदा होगा वो लीड करेगा. ऋषित अगले साइड पे गया हूं, स्लाइड पे गया हूं मैं. या सो आइडेंटिफाई एंड रिक्रूट इंटरनल चैंपियन. कोई एक बंदा, find out that he or she, we do not, if the company has 100, 200, 500, 1000, 10,000 leaders, 10,000 employees, they can't be leaders. Please, for God's sake, control. अगर आप अपनी कंपनी के कंट्रोल में नहीं रहोगे, आपके डिपार्टमेंट, आपके कलीग्स के कंट्रोल में नहीं रहोगे, तो दिन भर नॉलेज मैनेजमेंट चलते रहेगा. बस अपनी कंपनी उधर ही खड़ी रहेगी. बी assured. We don't want that. We want you to go ahead. We want you to be successful. So employees will be most likely to use knowledge management platform if they see their peers have success with it. Your colleagues look up to you. Be a leader. थोड़ा गब्बर सिंह बनो. शोले का गब्बर सिंह जो है, थोड़ा बन जाओ. तब जाके तुम्हारे हाथ के नो तुम्हारे जो कलीग्स है वो कहेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, यस. This is why it is important to identify one or multiple partners in your organization to be internal champions. Each department may have one. Multiple means if you have 10 departments in your company, one each, 10 champions. These individuals are driven, upbeat, eager to drive organizational challenge. Change is important and it should prove. Otherwise, हर एक बंदा कहेगा मैं कैप्टन बनूंगा, बट एक ही विराट कोहली है. सही है ना? एक ही MS धोनी था. He was he was a captain who led by example. He was one who could transform the team. कभी उसको लड़ते हुए देखा है? नहीं. उसको कभी गुस्सा देखा है? नहीं. उसको कभी रूडली बात करते हुए देखा है? नहीं. वो अपने आप में था. And classic example of how he, because leading a team, a Indian cricket team with about 1 billion people as players is not easy. क्रिकेट तो अपना जान है. सही है इंडिया में. Yes, sir. इंडिया हार गई तो कम से कम एक 4-5 हजार ट्वीट्स आ जाते हैं. Protest इंडिया, बस इंडिया हार गई तो खत्म हो गई बात. अगर विराट कोहली इंजर्ड हो गया तो लोग बोलते यार वहां बैठ के मजे कर रहा था, इंजर्ड होना ही था इसको. वी हैव वन प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो लोग कहते हैं, आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ लीडर. Without examples, we don't see how Mr. Ratan Tata, Sir Ratan Tata leads the Tata organization. In entire Tata organization, Tata group, there are about 67 to 75,000 employees. I am not having exact information, but approximately. But he is chairman emeritus, but yet today, emeritus means he has no active role. He has a passive role. But he is in Tata Trust. Tata Trust is the main of the Tata group. He has a say, but see how he leads. We want that. We want you to be that champions. Hopefully, this example helps you. Of course, not everyone will be thrilled from the get go.
And as Betsy points out, it's crucial you pay attention to those not so positive. Involve people who are not with you. That's called as successful knowledge transformation or passing the knowledge. Resist the urge to get feedback as I gave you. I'm not one of them who believes in feedback. I believe in seeing the change. I want to see that you learn and then you come back to me after 6 months, 1 year, 2 years saying, yes, that is successful knowledge management. Early naysayers and critics can provide some of you your most valuable feedback throughout implementation process. And once you have converted them, they will be conversion. Whatever I teach you and that you convert, you will be my best advocates. Hopefully, you understand what I try to say. Allow everyone an opportunity to be heard. If people are unhappy or frustrated, give some time to understand. If you spend some time, you understand. When you understand, you transform, readdress, re-implement, teach them. That's how things move for some time. But remember, everything has to have a deadline. Keep in mind, although only few employees may be willing to speak up, if one person is having a challenge, others are likely experiencing the same difficulty but doing in silence. Now, this is very important. Why I say this is important is because you have to have that third sense to understand, okay, what are we passing on? What have we told? Is it some rocket science? Is it something so difficult? If it is, you can fine tune. If it isn't, be confident and go ahead. I'm sure you will not be wrong. Next slide. Okay, something has got repeated. Okay, so Nishit, are you there? Yes, Hello. sir. Yes, sir. Yes, So sir. 17 is a duplicate slide. 18 is also duplicate side. So let's go to Steps of 19. management. 8 steps to knowledge management Yes. implementation. Just a minute, I'll have a glass of water and then we'll again start. Okay. So it's 8 steps to knowledge management. The 8 step approach will help you to plan common challenges, reduce risk, and maximize rewards. Risk is inevitable. Remember, अगर रिस्क टेकर नहीं हो, रिस्क प्लेयर नहीं हो, तो मतलब ही नहीं है. रिस्क होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए, समझ के लीजिए. This approach has been developed based on tried and true activities for implementing any new organizational program. The early steps emphasize strategy, planning, understanding the requirements, and gathering that information. The later steps focus on execution and continual improvement. Continual means ongoing improvement. Improvement by far and large is always ongoing. I keep improvising myself. Every day I have to learn. Establish knowledgement program objectives. If your objectives are not clear, you're not going to achieve what you want. So first and foremost, understand why are you trying to do this? What are you trying to do? And how are you going to do it? If that's not clear, there's no point in organization
implementing a knowledge management program. As I said earlier, and I'll repeat that, a lot of companies or organizations or businesses feel knowledge management is fashionable. So implementing tool like SAP or Kaizen or TQM or introducing um, trainings, like Six Sigma or anything, or sending people to IIMs or anything for entrepreneurship. ये सब ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहिए भाई, हाँ करेंगे, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप पढ़ाई करने आए हो, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है? हैव यू आस्क्ड योरसेल्फ, निशित? Yes, sir. Good. So what is your objective? Can you share some things, if you don't mind? Any one objective? Sir, to become an entrepreneur. Okay. So here we are. We have a friend, we have a colleague in your class that he is here to gain knowledge. This is a knowledge management program, right? आपकी 3 years जो डिग्री है, आप जो पढ़ रहे हैं, ये तो नॉलेज मैनेजमेंट है, सही है? Yes. We Yes. agree? Yes, sir. Now, after that, what is going to happen? Nishit, one of your colleagues who is in the class, he wants to be a successful entrepreneur. So he is going to implement all that what he has learned in the last 3 years for doing what? To become a successful entrepreneur. Objective is defined. It is clear. He knows he wants to do what? To be a successful entrepreneur. Either he is going to start something on his own, या तो his family may have a business, वो अलग बात है, उसके objectives बाद में define करेंगे. So before selecting a tool, defining a process, developing a workflow, envision, articulate the idea and state. लिखो, put it in paper, put it on the computer, and don't write over here there. हाँ मैं अभी अच्छा जॉब मिलाऊंगा. भाई अच्छे जॉब मतलब क्या? मुझे 1 रुपया सैलरी मिलनी चाहिए, 2 रुपया, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख? क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? To establish appropriate program objectives, identify and document the business problem. So as an entrepreneur, Nishit will put, if he is a first generation, he'll have to put, he may have an idea. He may have an idea of making a pen. Business drivers that will provide momentum and justify and implement. Document both short term and long term objectives. कैसे, कब, कितने टाइम में करोगी, क्या टाइम फ्रेम है? जिंदगी भर खाली एंटरप्रेन्योर बनना है, या 1 साल में अपना बिजनेस फ्लोट होना है, क्या है क्या? Address the business problem, business drivers, short term objectives, long term objectives, validate the program, see that the thing is on the right track, and help to create a long term picture. Is that clear? The same will happen when you're joining an organization. मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मेरी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? आई एम जॉइनिंग एज एन एग्जीक्यूटिव, आई एम जॉइनिंग एज अ ट्रेनी, I am being taken in operations department, sales department, finance department, whatever it is. मेरा short term goal, I'll join this way. Within 2 years, I want to be a senior executive. इसके लिए क्या करोगे? Within 4 years, I want to be a manager. Within 6 years, I should be a general manager. Within 10 years, I want to be a CEO. Write it down, frame. और खाली लिखना नहीं है, उसको क्या करना है? अप्लाई भी करना है सर.
अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है सर। उसको टाइम टू टाइम रिविजिट करना है, रीलुक करना है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है, भाई अभी समझो निशित ने बिजनेस चालू कर लिया, 6 महीने कुछ नहीं हो रहा है, क्या करोगे? हाँ निशित, सर फाइंड आउट द सर बैरियर्स। great. So you will have to have some guidelines, some frameworks which drive you. You just can't say, अभी ये पढ़ाई तक तो ठीक था, फर्स्ट ईयर से सेकंड गए, सेकंड ईयर से थर्ड गए, थर्ड ईयर में पास आउट हो गए, चलो डिग्री हाथ में मिल गई, पार्टी हो गई, सब हो गया, सेलिब्रेशन खत्म, नेक्स्ट व्हाट? जो आगे पढ़ाई करेंगे बढ़िया, जो जॉब ढूंढेंगे वो भी सही है। कुछ भी करो जिंदगी में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। पेपर में लिखने का टाइम, जो जॉब पे जाएंगे, 3 साल तो टीचर ने आगे तो बढ़ा दिया। अब क्लास में इतने जनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा, एक लड़का बात कर रहा है, हाँ ठीक है ना, सही है, मैंने तो सुन लिया। काम पे तो ये नहीं चलेगा, सही है ना निश्चित? करेक्ट सर। बिजनेस में भी ये नहीं चलेगा। उस टाइम तो टीचर को ये नहीं बोल सकते ना, मैम पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं पढ़ाई के लिए निकला लेकिन बरसात आ रही थी, मैं मैम कंप्यूटर चालू था लेकिन इंटरनेट बंद था। Once you're stepping out, the life of excuses is क्या हो गया? चेंज सर। गॉन, चेंज नहीं, गॉन। यस। उस टाइम तो पापा मम्मी को तो ये नहीं बोल पाओगे ना, या तो बॉस को ये नहीं बोल गए, सर जॉब के लिए निकला था लेकिन टिफिन गिर गया, सर आज पेट दुख रहा है, बीमार हूँ, इंटरनेट नहीं चल रहा है, सर गाड़ी में पेट्रोल है लेकिन चाबी गुम गई। यस सर। All that is gone. Prepare for a change. Objectives, बहुत सारे बाज, to give you a this thing example, I am in one of the most reputed colleges of India. It is top 10 in India. On their board, where I am helping students to become entrepreneurs. So this college has is in touch with government of India, and we a lot of students come to us. मतलब कम से कम साल भर में हम लोग 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते हैं, और ये लोग हमारे पास आते हैं अपना प्लान लेके इंटरप्रेन्योर बनने के लिए। और जब ये लोग इंटरप्रेन्योरशिप का प्लान लेके आते हैं, बड़ा फैंसी होता है, बढ़िया होता है, बहुत अच्छा बनाया हुआ रहता है, बट ये लोग कॉलेज से इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से निशित? यस सर। ये लोग कॉलेज प्रेजेंटेशंस में जो फैंसी वर्ड्स यूज करते हैं ना, यस सर। और ख्वाब देखते हैं, ये होगा वो होगा, मेरे को इतनी ऑर्डर आ जाएगी, फिर मैं यहाँ करूंगा, फिर मैं यहाँ से वहां उड़ाल मारूंगा, यहाँ से छलांग वहां मारूंगा। फिर मैं उनको बोलता हूँ, भैया आदमी हो या बंदर हो? यस सर। जिस स्पीड से जा रहे हो, ये तो प्रोफेसर को इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इम्प्रेस भी करोगे। अब रियलिटी में आ जाओ, ख्वाब की दुनिया से रियलिटी की दुनिया में आ जाओ। अब रियलिटी क्या है? कोई बता सकता है व्हाट इज द रियलिटी ऑफ अ लाइफ? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ अ एंटरप्रेन्योर्स लाइफ? द रियलिटी इज 1 रुपया जमा करने के लिए भी बहुत चैलेंज रहते हैं। करेक्ट सर। और हम लोग क्या ख्वाब देख रहे हैं, मैं बिल गेट्स को बुलाऊंगा, मैं वॉरेन बफेट को बोलूंगा $100 मिलियन दे देना भैया। करेक्ट सर। Prepare for a change. My next slide is talking for change.
नॉलेज मैनेजमेंट, 3 साल का जो नॉलेज आप लोगों ने सबने एक्वायर किया है पढ़ाई के दौरान, उसको अब टाइम आया है चेंज में लाने का, टाइम आ गया। चेंज मीन्स रियल चेंज। Knowledge management is not just application of technology, it's a culture change. There is going to be 360 degrees of change. Let's understand. मैं वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ बात करता हूँ, तो मैं वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं हूँ। मैंने खाली 2 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए 10-10 लाख, और वो इन्वेस्ट करके मैं पछता रहा हूँ। दोनों मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, और 5 साल से उन्होंने मेरे को 1 रुपया भी रिटर्न में नहीं दिया है। वो लोग मेरे को ऐसे ही गुल्ले मारते रहते हैं, गुल्ले मारते हैं मतलब खाद दिखाते रहते हैं, ये यस सर। होगा वो हो गया, ऐसा होगा, मैं चांद पे जाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। और जब मैं उनसे बोलता हूँ अरे भाई साहब जमीन पे उतर आ जाओ और इसकी बात करो, वो हमेशा मेरे को बोलते हैं यार तू तो पागल है। तो अभी ये 6th ईयर है, उनकी कंपनी अभी भी फंड्स रेज करती रहती है। Their balance sheet and profit and loss has no income, no substantial income, no substantial direct income. What is direct income, Nishit? सर जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट मिले सर, ऑन Perfect, सेल ऑफ परचेज पे। perfect. सो आपने कुछ डेवलप किया है और मार्केट में जाके बेचा है कस्टमर को, और वहां से आपको इनकम आई, इज कॉल्ड एज डायरेक्ट इनकम। यस सर। ये इनका चल ही नहीं रहा है। और भाई साहब अभी सब ये दोस्त मेरे दोनों खाद में हैं। मेरे भी हैं सर। यही होता है। यस तो सर। ये नहीं है रियलिटी, चेंज में आ जाओ। तो कमिंग टू द पॉइंट, जब मैं ये स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट में, वेंचर कैपिटलिस्ट कम टू मी टेलिंग मी व्हाट ये सब जो सोए हुए लोग हैं ना, इनको फंड चाहिए। तो आप इनको जगा सकते हो तो बोलो, तो हम, अगर आप बोलोगे तो इनको फंड्स दे देंगे। आई एम अ न्यूट्रल प्लेयर, एंड देन आई टॉक टू बोथ साइड्स, एंड देन आई टेल देम दैट ये 10 में से एक जन जेन्युइनली डिजर्व करता है, 9 जन अभी भी सपने में हैं, इनको सपने में ही रहने दो, आपके पैसे मत देना, क्योंकि ये लोग कभी जागेंगे नहीं। सो चेंज, common hurdle, increasing knowledge sharing, and then companies primarily reward individual. The practice promotes knowledge is power, behavior that contradicts knowledge sharing, knowledge driven culture, successful implementing of knowledge management, bringing in change, shared values, shared norms. लोग रेजिस्ट करते हैं। ये हमारे 2 दोस्त लोग जो मैं बोल रहा हूं, जिसको मैंने 10-10 लाख गधे की तरह दे रखा है और फंस गया हूं, ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। अरे भाई आप लोग सिकंदर ए आजम हो या बिरबल या अकबर हो, तो तुम्हारी कंपनी की क्यों नहीं चल रही है? कैन यू सी व्हाट आई एम टॉकिंग? आर यू एबल टू रिलेट व्हाट आई एम सेइंग? Recruit knowledge management champions in an organization. Next slide, please, Nishit. 21 slide. आप भी 21 पे हो ना? यस सर। डिफाइन अ हाई High लेवल level process foundation. Laying out फाउंडेशन। high level knowledge management process. Key step effective implementing. Beginning with high level process will help you progressively develop and hone detailed procedures about step 4, 5, and 6. Keep in mind, people who will be the users and contributors of knowledge should be part of conversation. I keep involving them. A full developed process should be finalized, approved prior step 7 implementation. Organizations that overlook defined knowledge process will not realize the full potential of their knowledge management objective. अगर आपने सीखा हुआ, अगर आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की, तो आप उसको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाओगे। ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो क्या होगा निश्चित?
you'll not be successful. Successfully. Common knowledge management practices to consider plan include knowledge management strategy, creation, identification, classification, capture, validation, transfer, maintenance, archival, measurement, and reporting. This slide, step 3 and 2, number 2, is going to be your Bible of working. If you understand, you'll be successful. Otherwise, you'll keep going back and forth. Go to step number 4. Determine and prioritize technology needs. We have spoken about this. समझो, implement करो. Don't do for the sake of doing it. पैसा ज़्यादा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा और किसी ने बोल दिया उसके लिए करना है, मत करो. You will not succeed. Step 5. थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा. If you have any questions, you can ask me because we have just another 5-10 minutes, and then I want to leave another 5-10 minutes for question and answer so that you all can understand, and then we can end this session by 4. Is that okay? Yes, sir. So we are on where? Step 5. Assess current state. After you have established your program objectives, prepared for cultural change, define a high level process, determine, prioritize your technology, assess the current state of knowledge, understand where you are, map it. What is mapping? Yes, sir. What is mapping? So mapping means Write it down, drive it, see where you are, what is the state of your company, understand the state the of affairs. process and Mapping a processing, mapping process. the activities of the organization. Correct. The What are assessment the should cover. operations are held in it? Absolutely. The assessment should cover 5 core knowledge management components. People, as you correctly pointed out, Nishit, process, technology, structure, culture. अपना वर्किंग कल्चर क्या है? कितने शहंशाह है, कितने बादशाह है, कितने जाग रहे हैं, कितने सो रहे हैं, कितने अडॉप्ट कर पाएंगे, कितने खाली टाइम पास करेंगे. A typical assessment should be providing an overview of current state, gaps between current and desired states, and recommendation for closing the gap. By identifying, you're closing the gaps. These recommendation will be foundation for the roadmap to step number 6. You need to slowly and steadily build a knowledge management implementation roadmap. It's a process. It is not easy. It's not going to be done in a day or a week or a month. It can be a 3 months process. It can be a 6 months process. It can be a yearly process, or it can be a online, or sorry, ongoing lifelong process. An online lifelong process is not, it doesn't mean that you're wrong. Your company is a dabbu company or a dead company. In effect means that you are slowly and steadily improving your company and mapping your result. And by seeing or doing that, you are successfully going to grow slowly and steadily. Am I right? Yes, sir. Implement. अगर आपने कुछ आज डिसाइड किया तो उसको कल से इमीडिएटली दौड़ के भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है.
देखिए क्या गैप्स है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्यों ऐसा होगा, क्यों नहीं हो सकता है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों सोच रहे हैं. Implementation, knowledge management program, and maturity. The overall effectiveness of your organization requires significant personal resources. अब ये हर दिन अगर आप 8 घंटे करते हो तो सिग्निफिकेंट मतलब अगर आपने 4 घंटे इसमें नॉलेज मैनेजमेंट में लगा दिए तो काम कब करोगे. सही है ना. यस सर. आपको काम भी करना है. आपका जो डिफाइंड काम है, अगर आप सेल्स में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो या एचआर में हो, सप्लाई ऑपरेशंस, डिजाइन, तो आपको 6-7 घंटे वो भी काम करना है. सो टाइम, बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग हॉल. लॉन्ग हॉल मीन्स टाइम, 6 महीना, 8 महीना, 9 months, 1 year. बट मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग इंक्रीमेंटल. आप स्लोली एंड स्टडीली उसको लेके जा रहे हो. जाके अगर आज मैं कुछ सीख के आया तो मैं आई कांट कम टू माय कलीग निशित, अगर मेरा कलीग हो तो मैं वो लर्निंग समझो एक फाइल हो 100 पेजेस की, आई कांट गो एंड थ्रो इट ऑन इस टेबल. हाँ निशित ये ले लो, इसको इम्प्लीमेंट करके करने चालू कर देना. कैन आई डू दैट? नो सर. यू विल से यार पागल हो गया है, लगता सटिया गया है. आप भी क्या करोगे, मेरे को इम्प्रेस करने के लिए, मैं अगर आपका बॉस होगा तो आप बोलोगे हाँ सर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, क्या है ये, क्या है, अरे मैं ना ये सीख के आ गया हूँ. आप भी 2-4 क्वेश्चन पूछोगे, इम्प्रेस कर दोगे, मैं भी बोलूंगा वाह कितना अच्छा कलीग है मेरा निशित, बड़ा होनहार है, जरूर मैंने बोला हुआ सीखेगा. क्या सीखा है मैंने, उसके फाइल पे टेबल पे टपक दी एक फाइल, फेंक दी. वो भी लेगा, बाजू में रख देगा, बोल देगा बॉस पागल हो गया है, मेरे पास यहाँ टेबल पे और 10 फाइल पड़े ऑफिशियल काम के. खत्म. You understand what it is? यस सर. So implementing is a gradual process. It requires hand holding. It requires discussion. It requires understanding. जब मैंने काफ़ी सालों पहले बीकॉम कर दिया था तो बीकॉम के फाइल्स थे, सब पढ़ाई के सब बुक्स थे. फाइनली ग्रेजुएट हो गया और एक बार ऐसा कर दिया, बस बहुत हो गया. इसके बाद ना मेरे को प्रोफेसर को देखना है, ना कॉलेज को देखना है, ना बुक को देखना है. 2-3 दिन तो मैं सोया पड़ा था अपनी खाद में. अक्सर ये हो जाता है. सही है ना. क्यों? यस सर. लेकिन इसको इम्प्लीमेंट बाद में कभी एक बार मैं जाग गया, मैंने बोला ये तो हो गया, कॉस्टिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सब ये सब्जेक्ट्स थे उस टाइम के. आई एम टॉकिंग ऑफ 90s. अभी काफी सारे सब्जेक्ट्स बदल गए कॉमर्स में. और बाद में मैंने कहा ये इम्प्लीमेंटेशन का आगे क्या है. जाग गया इंसान, मैं भी जाग गया. As you advance, I have written over here, as you advance through each step of the roadmap, make sure you're realizing your short-term wins. I have to then understand what is how am I going to win with this piece of paper? Same is going to be happening to you in your working career or entrepreneurship career. May without them, your program may lose momentum and your support of your key stakeholders. जो कुछ करते हो उसका आगे भी कुछ मायने होना चाहिए. The last slide, I guess, yeah, the second last slide. Yeah, I guess this is the last slide. Step number 8, measure and improve the knowledge management program. If it is not measured, it is not successful. Now, can anybody, before I talk something, can anybody tell me what is that I mean to what is that I mean by measure management? What is measure? सर उसकी एस्टिमेशन परफॉर्मेंस और
जो प्लानिंग परफॉर्मेंस सर मैच करना सर, सो मेजर एक करना सर कुछ कंपनी की। उसको कैसे, कुछ एग्जाम्पल आता है आपके दिमाग में, कैसे उसको मेजर करोगे, क्या मतलब, कुछ एक एग्जाम्पल दीजिए ना। So suppose I have a company and I am planned to produce 100 pens in a हम्म week, हम्म but due to some reasons I am failed to produce 100 pens and I am produce 80 pens. हम्म So the estimation between 100 and 80 is 20. So sir, बढ़िया। सो yes sir. इसको इसको ऐड करते वक्त ये आपने एक माइक्रो एग्जाम्पल दिया। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल एट अ मैक्रो लेवल। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैक्रो Yes sir, high level. or a bigger level? So now, giving the example of what Nishit gave, your company in 2019 and 2020 had a turnover of 100 crores. Yes sir. 18-19 में 95 crores, 17-18 90 crores. You are measuring your performance. Yes sir. Now, by adding knowledge, so within the span of 5 years, 10 years, 15 years, or 1 year, 2 year, 3 year, whatever. So समझो 18 में Nishit has learned Kaizen. This is a tool in production. In automobile industry, it is very highly used. Toyota is one company which uses it. It is a tool which was invented in 80s, and till date today 2021, Kaizen, TQM, and SaaS related tools are used by companies like Toyota and Honda, and their production and their performance improves amazingly. सो समझो 18 में अगर निशित ने अपनी कंपनी में कैजन इम्प्लीमेंट किया और उसको सक्सेसफुली नॉलेज ट्रांसफर किया, सो दैट मीन्स इन 18-19 हिज टर्नओवर हैज ग्रोन बाय 5%, 5 crores. Next year 7%, 8%. Successfully learning, knowledge management, acquiring knowledge, implementing, measuring, and growing is called as a full cycle of knowledge management program. Do you see the example, Nishit? Yes sir. So I guess that's my last slide. It's 3:40. We have another 5 or 10 minutes or 15 minutes to talk. If you have any questions, you can ask me. If you want to go back to any of the slide and you want to spend some time and want me to explain you, I can still do that. You can take say 2 or 3 minutes ka break, and I am there online only. Go through all the slides. I have, I guess, 25, 26 slides. Go through that, and if you feel anybody has a question, anybody wants me to answer anything, I can answer, and then we can finish by 4. Is that all right? Yes sir. So we'll take a 5 minutes break and then come back. Yes sir, sure. Great. So I'm here only. खाली mute करके रख रहा हूँ, Okay sir. and I will be back with Pratima ma'am. Is that a good idea? Hello. Okay, Nishit, we'll be back in 5 minutes then.
Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, I'm back. So if anybody has a question, we can start. Is it okay? Yes, sir. You continue. Okay. So I had just given them 5 minutes. I said Yes, sir. the presentation is over. You can have a look at the slides again, and then if you have any questions, you can ask so that I can do the question and answer session and finish by 4. Yeah, that is okay, sir. Yeah. Students, anybody having any question, just ask. Yes, students. Is there anybody wants Someone, to yeah. ask? No, ma'am. Okay. So I think no one is there Okay. for asking. So, Okay, sir. So I would like to thanks now yeah. our guest lecturer, Mr. Uday sir, for lightening us with their knowledge. And today's lecture was a full of knowledge and interesting things. I gave deep insight into the topic and also revealed some interesting facts. So I'm pretty sure the precious knowledge that Mr. Uday sir gave us will definitely help us in our studies and future. So now I am end up this section with the today. Thank you, sir. Thank you very much, all. Thank you Thank for you, the sir. patience, and hopefully it helps you, all of you. And if you have any questions or anything related, you need any help in regards to knowledge management, ma'am has my email and phone number. You feel free to write or call. I'll be more than happy to guide or speak or enlighten you. Thank you, sir. Yes. Thank you. Oh, Thank you oh, very much. yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you Thank very you much. for giving valuable time. Pleasure as always. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you, sir. So, ma'am, should I end it? Yeah. First, stop the recording and end the meeting.